इस वीडियो में हम 10th क्लास का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी करेंगे। इसके मेन टॉपिक आपके जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अंदर हम चेक करेंगे जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। सेकंड है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। थर्ड है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। थर्ड टॉपिक जो इस चैप्टर के अंदर है कि जो गिवन इक्वेशन है उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें। और फोर्थ आपके पास नेचर ऑफ द रूट्स, जो गिवन इक्वेशन है उसके नेचर्स बताने आपको कि इक्वेशन के नेचर्स क्या है। अब हम चैप्टर सेकंड का टॉपिक था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपने सेकंड चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्टडी किया था और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था आपके पास अ पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म px that is ax square bx plus c is called a quadratic polynomial. A not equal to 0 and degree of this polynomial is 2. हाईएस्ट पावर आपके पास 2 है, डिग्री 2 है, therefore it is quadratic polynomials. Quadratic polynomials. Now then quadratic equation. Quadratic equation, a equation of the form ax square bx plus c equal to 0, a not equal to 0, in variable x is called a quadratic equation. Quadratic equation where a, b and c, a, b, c are real numbers. Real number. Now you have to understand difference between quadratic polynomial and quadratic equation. Quadratic polynomial, that is px equal to ax square bx plus c not equal to 0, but quadratic equation is equal to 0. That is the main difference between quadratic polynomial and quadratic equation. Quadratic equation is always equal to 0 and quadratic polynomial, that is equal to px, are quadratic or not. You have to check whether the given equation are quadratic or not. Solution. Your first part is x plus 1 square, that is equal to 2x minus 3. Apply a plus b का होल स्क्वायर here, x square plus 1 2 into x into 1 और 2x minus 6, x square 1 2x minus 2x plus 6 equal to 0. Now this one is plus 2x or this one is minus 2x. These two terms are cancelled. Then you have x square plus 7 equal to 0. Then highest degree of equation is 2, therefore it is quadratic, or you can say that it is in the form of ax square bx plus c equal to 0, therefore it is quadratic. Therefore it is quadratic equation. After solution, if highest power of variable is 2, means degree of variable is 2, then it is quadratic equation. Yes. Now second part, third part, x minus 2, x plus 1, x minus 1
और x plus 3. Now multiply this. First multiply x by x, that is x into x, x square, x into 1, that is x, minus 2 into x, minus 2x, minus 2 into 1, that is minus 2. Multiply this x square, x multiply with 3, that is 3x, minus 1 into x, that is minus x, or minus 1 into 3, that is minus 3. Transpose all term to left side, x square, x, 2x, minus 2. When you transpose right side term to left side, then all sign are changed. This is minus x square, पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में आके माइनस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0. Now this x square is positive and this one is negative, so cancel. Now x positive, x plus x 2x, minus 2x or minus 3x, that is 5x, और this 1 equal to 0. Constant term का difference 3x plus 1 equal to 0. It is not in the form of ax square bx plus c equal to 0. Therefore, given equation is not quadratic equation. गिवन इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन किया. सॉल्यूशन करने के बाद आपकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 है, नॉट 2. इफ हाईएस्ट डिग्री इज 2, देन दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इन दिस केस दिस इज गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक. जो सॉल्यूशन किया वो गिवन इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक नहीं है. ओके, नाउ योर next part is 7th part. X plus 2 raised to power 3, that is 2 into x square minus 1. X plus 2 का cube. Now apply identity a plus b cube, that is a cube, b cube, 3ab or a plus b. Now if you compare with this, a is x is a or 2 equal to b. Now apply identity on this x plus 2 raised to power 3 in left side. So you will write x cube 2 का cube plus 3 into x into 2x plus 2, and your right side is 2x square minus 2. X cube, that is x की power 3, 2 cube 8, 2 in 3 into 2, that is 6x, or x plus 2. Right side is 2x square minus 2. Now x की power 3, 8, 6x, multiply with x and 2. 6x into x, when you multiply, power are added, 6x square, or this one is 12x. Transpose right side term to left side, minus 2x square plus 2 equal to 0. Now in this expression, highest power is x की 3. Now 6x square or minus 2x square. One term is positive, one is negative. So the difference of this, that is 4x square. Now plus 12x, 8 plus 2, that is 10x, that is equal to 0. X cube plus 4x square plus 12x plus x cube. Difference of this one is minus plus 4x square, 10 प्लस का आपके पास तो 12x,
8 plus 2 that is 10 equal to 0. Now it is not in the form of ax square bx plus c equal to 0. So therefore it is not quadratic equation. आपके पास यह हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3, therefore it is not a quadratic. It is not a quadratic equation. I hope you will understand this question. Now last one is eighth part, x cube 4x square minus x plus 1 that is equal to x minus 2 raised to power 3. Left side you will write as it is, x cube minus 4x square minus x plus 1. In right side again you can apply the identity apply करें आप, x cube minus 2 का क्यूब 3 into x into 2 or x minus 2. You have applied a minus b का cube that is equal to a cube minus b cube minus 3ab और ब्रैकेट के अंदर a minus b. This identity you have applied here. Now solve this. Left side as it is, x cube minus 4x square minus x plus 1. This one is x cube minus 2 की 3 8 3 2 जा 6x. This one is x minus 2. Then x cube minus 4x square x plus 1 that is x cube minus 8 minus 6x into x minus 6x square minus 6x plus 2 that is 12x. Now this term you can cancel here. X cube or x cube both are positive, but one is left side of it, one is in left side or other is in right side, having the same sign, so you can cancel. Now this one is 4x square minus x plus 1. Transpose remaining term to left side, 8 plus 6x square minus 12x equal to 0. अब यहां से आपके पास माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, दिस वन इज माइनस, दिस वन इज प्लस. नाउ डिफरेंस ऑफ 6x स्क्वायर और 4x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर. माइनस 12x और माइनस x बोथ आर नेगेटिव, एडिंग बोथ बट साइन इज नेगेटिव, दैट इज 13x. 1 plus 8 that is 9 equal to 0. Again highest degree is 2, therefore it is quadratic equation. It is a quadratic equation. Because highest power of variable is 2. When highest power of variable is 2, then that is the quadratic equation. Or other power are in whole numbers. Thank you. I hope you will understand this topic, the which equation is quadratic and which is not quadratic. If highest power of variable is 2, then that is quadratic. Yes, exercise 4.1 question second. Represent the following situation in the form of quadratic equation. आपको जो गिवन कंडीशन है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेस करना है कि गिवन कंडीशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है. फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 520 मीटर, 528 मीटर. जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास उसका जो एरिया दे रखा है दैट इज 528 मीटर. Then length of the plot in meters is 1 more than the twice of breadth.
ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस से वन मोर है। तो आप यहां सपोज कर ले, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर, x meter. Let breadth of rectangular plot be x meter. Then length of plot. Length of plot according to question one more than the twice of breadth. One more than the twice of breadth. Then length of the plot B, that is 2x plus 1. 2x plus 1 meters. Now area of rectangle, area of rectangular plot that is equal to 528 meter square. As we know that area of rectangular plot, that is L into B, that is equal to 528. अब x is 2x plus 1. A value of B, that is x, that is equal to 5 into 528. 2x square x minus 528, that is equal to 0. Then highest degree of variable is 2, therefore it is quadratic equation. Yes, it is quadratic equation. आपको इस क्वेश्चन में केवल ये चेक करना था कि जो गिवन कंडीशन है उससे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है या नहीं। तो यू हैव प्रूव्ड दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ सेकेंड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेक्यूटिव मीन डिफरेंस इज 1 1. नाउ लेट two consecutive integers are x and x plus 1. Then according to question, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर मीन्स आपने सपोज किया है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर है आपके पास, दैट आर x एंड x प्लस 1. नाउ प्रोडक्ट ऑफ दीज इंटीजर x इंटू x प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 306. x स्क्वायर x माइनस 306 इक्वल टू 0. एंड अगेन highest power of variable is 2, degree of variable 2, otherwise you can say that it is in the form of ax square bx plus c, therefore it is a quadratic. Yes, it is quadratic equation. Yes, it is quadratic equation. Now solution of third part. Roshan mother is 28 year older than him. Means अगर रोशन आज x ईयर का है आज, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 26. ओल्डर मीन ग्रेटर देन, तो रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. So you will suppose that let Rohan's mother age
बी एक्स ईयर्स। अब ओल्डर है 26 ईयर, तो यू कैन राइट देन एज ऑफ हिज मदर, that is equal to x plus 26 years. X plus 26 years. Rohan mother is 26 year older than him. Then product of their age 3 year from now. आज से 3 साल बाद, after 3 years एज ऑफ रोहन। स्टूडेंट, अगर आज आप 15 साल के हो तो 3 साल के बाद कितने हो जाए 18। तो अगर रोहन आज एक्स ईयर का है आज की डेट में, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 3 ईयर्स। एंड आफ्टर 3 years age of his mother, that is x plus 26 plus 3, that is x plus 29 years. Then according to question, Rohan mother is 26 year older than him, product of their age 3 year from now. Then according to question, product of their age x plus 3 into x plus 29, that is equal to 360. Now multiply these two equations, x into x, x square, 29x, 3 into x, that is 3x, 3 into 29, that is 87 minus 360 equal to 0. X square 29 or 3, that is 31 x. Now 87 is positive and this one is negative. Difference of this minus 3, 7 or 2 equal to 0. Again, highest power of variable is 2, degree of variable is 2, therefore it is a quadratic equation. I hope you will understand these 3 parts. और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप अवश्य इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।